Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ameen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Majid. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Respected elders, listeners and viewers of this Kuthuba Jumua, ladies and gentlemen, I have been asked to deliver this speech in English, which is neither my mother tongue nor your mother tongue. But I was told that this is customary here, that the second Jummah happens in English language. But in due course, I'll speak few ideas even in Urdu. Today I would like to speak on the subject common sense. It's a very rare subject which is being touched upon by speakers. Neither we discuss this subject in masjids nor in any other place. We know that Allah subhanahu wa ta'ala has endowed us, has blessed us with the most supreme thing, which is called as intellect, mind. None of the creatures in this universe possess that mind and intellect except human beings. This is a fact. The other thing is also a fact. The opposite of this is also a fact, that in and around we find a large number of people do not apply their mind. They use their common sense. It's a day-to-day observation. Let me point out few examples to you how we, particularly the Muslim community, and even in general other people, they employ very less amount of common sense. For example, in some of the masjid I have seen people bringing their toddler babies of 1.5 years and 2 years, and school children who are yet to go to school, they are being brought to the masjid, and they create a lot of disturbances to others. They cry. In our masjid, it has been happening for quite some time that there is a boy of maybe around 4 years or 3 years old. He used to crisscross all this stuff, and he picks up the phones and keychains and everything. And the namazi, the Musalli people, what they were thinking is that at the end of the namaz, we will collect these things from his father. But that's not the case. There are certain thieves who were standing at the end of the saf. As soon as this boy brought the cell phone, they picked up and ran away. When he gets keychain, they will throw it out and they'll pick up the phones and run away. Children do not have this sense of purity and impurity. They do not have this sense of the sacredness of masjid. It is a common sense question of parents that they must know at what age they should bring in their children to the masjid. Of course, Nabi sallallahu alaihi wasallam has instructed us to make our children accustomed with prayers and namaz at the age of 7. So it's a common sense, it's an issue of understanding that you need to bring your children to masjid when they grow old enough to understand things, maybe at the age of 7. Even below 7, you are entitled to bring them, but the question is whether they will maintain the discipline. You have an understanding of your children better than anybody else. The second thing what we observe is that
The pulpit, the mihrab, the musalla of Imam is the axis of the masjid. And every time the saf should start with the center. Behind the Imam, the first person will stand, and the saf will go on increasing on right and left and right and left. Once the saf is filled, the second saf will start exactly behind the Imam, maintaining the central axis of masjid. But what we observe, this is too small masjid, but we have very big masjid as well, where we see people standing right below the fan. They'll start the making saf from there. Some people would love to start their saf directly where the blower of the AC is there. Wherever they feel convenient, they start building this up, which is against common sense, which is against the basic tenets and teachings of Islam. It is a military discipline, and Imam is the captain, and every Musalli should organize himself in a way that it looks like a military discipline. One of the observations is about spitting. People have a very bad habit of spitting here and there while walking, while sitting. And when you go to buildings, you can find the corners of buildings in the staircase painted red because of the spit. Spitting is a very bad and unhygienic habit. It creates an aversion to others. Whenever there is a need to spit, you need to do it discreetly. Get away from people. Go to some side, spit, and put mud over it. This was the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But unfortunately, we see people sneezing and coughing during namaz without a mask over the face or having a kerchief in their hands. This is a very common scene in our masjids. And we see the loud usage of mobile phones. Somebody will be coming and he will be having a conversation with someone else in his business or something. And he will enter into the masjid and he'll come up to the saf speaking to somebody over the phone loudly. This is against common sense. This is against the social etiquettes, what Islam has taught. Because when you enter into masjid, you must maintain the decorum of the masjid and switch off the phone. And sometimes you find people very ignorant of their phones which is ringing right during the namaz. Our scholars have told us that it is not a problem, that you can put your hand inside your pocket, pick up the phone, switch out the phone and continue your prayer. मैंने अपनी जो बात बयान की है वो है कॉमन सेंस की जो कमी है. उसमें मैंने 4 मिसालें दी. एक मिसाल तो मैंने ये दी कि लोग छोटे बच्चों को मस्जिद ले आते हैं और मस्जिद में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं. दूसरी बात मैंने बताई कि जब सफ बनानी हो तो ठीक इमाम के पीछे बनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग सहूलत पसंद होते हैं और वो सफे बनाते हैं फैन के नीचे, एसी के नीचे या जहां से भी शुरू करें. हमारे मोहल्ले की मस्जिद में एक ही दरवाजा है. There is only one door. I think here also you have only one door, but this masjid is bit bigger, and the place where I was praying, now it has been expanded. It was half of this masjid, and people, those who are masbooq, जो बाद में आते हैं नमाज में, वो इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाएंगे और पूरे सुकून के साथ बाकी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे. And all the people will be struggling to go out. They have appointments, they have some work. Magar this guy, he is praying with so much of khushu and khuzu that it takes 5 minutes for him to complete his 2 rakat or 1 rakat. ये सब हम समाज में देखते हैं. थूकने की आदत को हम देखते हैं समाज में, और मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल देखते हैं. Common sense, why is it important? Common sense, applying and the understanding, the bare minimum understanding is very important because it avoids conflicts. It avoids unruly behavior. And you have a discipline and harmony wherever you are when you apply common sense. You sometimes go to this park. There is a walking track. You are free to do your walking in the morning. But there are people who love to do their stretching gyms in the flower bed.
or in the green grass or lawns. Sometimes we see even elder people swinging and children swing. When they are, objected, they say, where is it written? कहाँ लिखा हुआ भाई? That means ये अपने common sense को घर में लगाकर आ गए, and they have come without common sense, and they want everything at every nook and corner there should be instruction. Every nook and corner, fan के नीचे नमाज नहीं होगी, फला नहीं होगा. यानी they want the whole wall of this masjid to have instructions, as if they are going to study all those things. So these are the problems we see everywhere. Now the question is, what is common sense? Common sense, as psychologists have defined it, it's an intuitive ability to make sound judgments and decisions based on your daily life experiences. यानी ये सोच फितरी तौर पर इंसान के अंदर आए कि इस वक्त मुझे क्या फैसला लेना है, इस वक्त मुझे कैसे बिहेव करना है, और इंसान ये तजुर्बे से सीखता है. There is no certificate course for creating common sense. There is no diploma course available for common sense. There is no degree course available for common sense. And common sense are not taught in laboratories. किसी लैब में नहीं सिखाया जाता है. It has to be learned by applying mind. Common sense पर बहुत से theories हैं. लेकिन जब इंसान कॉमन सेंस सीख जाता है तो ट्रैफिक क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देख लेना, इट्स कॉमन सेंस. खाने से पहले हाथ धो लेना, इट्स कॉमन सेंस. ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉमन सेंस. अगर मैं यहां सूट बूट पहन के आ जाऊं, अमेरिका में तो चलेगा, यहां सूट बूट पहनकर आकर मैं आपके सामने खुतबा दूं तो आप ताज्जुब करेंगे, हंसेंगे. अगर मैं नौशा का दुपट्टा पहनकर आऊं तो यू लाफ एट मी. ड्रेसिंग एज पर द सिचुएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कॉमन सेंस. ये अकलमंदी की बात है कि आदमी समर में कैसे पहने, विंटर में कैसे पहने, शादी में क्या पहने, मस्जिद में क्या पहने, मैयत में जाए तो कौन सा कपड़ा पहन कर जाए. कॉमन सेंस है. दिस इज नॉट टॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज व्हाट यू हैव लर्न्ड ओवर many years of your life. I would like to tell you few theories without going into the depth of those theories. One of the theories says that it is tacit knowledge, means the knowledge which you have learned by experience, which you apply, which is called as common sense. For example, I find somebody here in the masjid, I have a dispute with that person. Maybe he would have cheated me in business. Maybe he is my own brother who has not given me my shares of inheritance. Maybe I have a dispute with him. Now tacit knowledge says whether I should pick up a quarrel right here in the masjid, or I should speak to him that I am planning to come to your house to have a settlement of the disputed issue. Or is that I am going to invite him for a dinner or tea at my home and going to say that we have this dispute pending for a quite long time, let us sit together and resolve. This is tacit knowledge, which says me that this is not the place to pick up a quarrel and fight with the brother with whom I have a dispute. इसको कहते हैं अमली तजुर्बे से इंसान जानता है कि कब कहां बात करनी है. इसी तरह ह्यूरिस्टिक is another theory which says mind का एक शॉर्टकट होता है, थंब रूल होता है. There are many shortcuts. जिंदगी में हम शॉर्टकट सीखते हैं. We apply that shortcut and we come to a conclusion, we make decisions. We don't spend too much of time critically thinking. It has to be taken a decision on the spot. For example, you are visiting some village to your relatives' home, and you know that if you take the lanes, it's darker. It's not safe to travel in that lane. And you know that there is another route which is 1 kilometer, 2 kilometer lengthier, but you will be traveling through a wider road which will be safe. You take a decision on the spot that I'm not going to go to my brother's house through this lane, rather I'm going to take the longer route. This is heuristic. This is the mind's application
on the spot without any critical knowledge that you have taken a decision to be safe and travel a little longer to reach the destination without risking yourself traveling in the darker lanes. Similarly, we have social cognition theory wherein one has to be sensitive to others' emotions. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि कोई मस्जिद में ना आए। आपने फरमाया कोई मस्जिद में ना आए जब उसने लहसुन खा रखी हो। लहसुन खाने के बाद मस्जिद में इसलिए नहीं आना चाहिए कि दैट क्रिएट्स अ सटल अनप्लेजेंट फीलिंग इन योर ब्रदर। अच्छी नहीं लगती बू। जिस मजहब ने इतनी बारीकी सिखाई हो कि आप खाना खाकर आए जिसमें लहसुन डोमिनेंट हो और लहसुन की बू से बगल वाले को तकलीफ होती हो, तो आपको लहसुन खाकर आने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया भला तकरबना मस्जिद ना, हमारी मस्जिद के पास ऐसा आदमी ना आए, यानी नमाजियों के करीब ना आए। दिस इज व्हाट इस्लाम टीचेस अस, टू बी सेंसिटिव to others' emotion and feelings. This is called as social cognition theory. These are the theories which say that common sense is developed through different aspects and angles. Let me wind up with what is Islamic teachings. There are a lot of instances and stories which can be quoted in support of inculcating common sense. Let me tell you two things. One is when the brothers of Hazrat Yusuf alayhi salam, they were traveling from Palestine to Egypt. They were entering Egypt to get ration, food during the famine period. Hazrat Yaqub instructed them, this is there in Quran, and he wanted them not to enter into the city through one gate. They were 11 brothers. It was a risky thing because they were not the natives of Egypt. They did not know the language of Egypt. They were strangers. They were well built. And people may misunderstand them something as, rioters or something else. So he instructed them to enter into the city from different gates. But he said, this is my strategy, but I'm not going to save you from what Allah has written for you. This is what Islam teaches us. Apply common sense, but have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and things are going to happen as Allah ta'ala has destined. When there was a quarrel during the reconstruction of Kaaba, there were different tribes. Everyone wanted to have that privilege of keeping the corner stone, black stone at the corner of Kaabatullah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us to be practical, have that practical wisdom, have that intellect. He said, bring a cloth. He spread it. He put the black stone, Hajar Aswad kusme rakha, and he wanted all the tribe leaders to hold different corners and edges of that cloth. लोग उठाकर कपड़ा ले आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के कॉर्नर में हजर अस्वद को नस्ब किया। ये कॉमन सेंस है कि अप्लाई किया कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, इख्तलाफात को कैसे दूर किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसें बयान की। वक्त खत्म हो रहा है, मैं बस आपके सामने दो चार हदीस बता देता हूं बगैर कोटेशन दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जूता पहनना हो तो उसे झाड़ लिया करो, कहीं उसके अंदर मोजी कोई कीड़ा ना हो। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने फरमाया कि ठहरे हुए पानी में, तालाब में पेशाब ना करो, इसलिए कि उससे दूसरों को तकलीफ होगी। आपने फरमाया कि तीन चीजें जिसकी लानत होती है, एक ये है कि आदमी ठहरे हुए पानी में इस्तिंजा करे, पैखाना करे, पेशाब करे, या रास्ते में पैखाना करे, पेशाब करे, या साये के पीछे, दरख्त के नीचे, साये के नीचे अगर कोई आदमी गंदगी करता है, तो ये तीनों चीजें लानत भेजने वाली। इसलिए कि लोग पानी से फायदा उठाते हैं, रास्ते से फायदा उठाते हैं, छांव से, साये से फायदा उठाते हैं, और आपने उसे गंदा कर दिया। हाइजीन के खिलाफ है, अक्लमंदी के खिलाफ है, समझदारी के खिलाफ है। दिस इज व्हाट ही इंस्ट्रक्टेड अस। आपने फरमाया कि खाने से पहले हाथ धो लिया करो, इसलिए कि पता नहीं हमारा हाथ कहां लगा हुआ हो, इसलिए हाथ धोकर खाने के लिए फरमाया। बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, हाथ धोकर खाओ, अपने हिस्से का सामने से खाओ। ऐसा नहीं कि भाई पुराने जमाने में एक थाल में 5-6 लोग खाते थे, बोटी वहां नजर आती है तो आपको ऐंड कर उठाना, ये शाइस्तगी के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। आप अपना हिस्सा वो खाइए विच इज नियर टू यू। दिस वाज स्टार्ट बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि रात में सोते वक्त बर्तनों को ढक कर सो, यानी खाना पानी जिसमें इंफेक्शन आने का इम्कान है, रात में उसे बंद करके सो। आपने फरमाया रात में सोने से पहले चिराग बुझा दो, इसलिए कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे घर को आग लगे, वो कोई क्रिएट करेगा वाकया जिसके नतीजे में आग लग सकती है। आज के जमाने में सोने से पहले सारे लाइट्स ऑफ हैं क्या चेक कर लेना चाहिए।
डोर बंद है क्या चेक करना चाहिए। और यहाँ तो नहीं, दिल्ली वगैरह में, नॉर्थ इंडिया में हम लोग रात में रूम हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो रूम हीटर को ऑफ करके जाना चाहिए, सोना चाहिए, बाहर जाते वक्त बंद करना चाहिए, गीजर को बंद करना चाहिए। सब कॉमन सेंस की बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। एंड हाउ डू वी इनकलकेट दिस? देयर आर 4 मेथड्स। नंबर 1 इज नॉलेज। द मोर यू लर्न, द मोर यू विल अटेन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ कॉमन सेंस। जितना आप पढ़ेंगे, आदाब जिंदगी एक किताब है, आप पढ़ें तो उसमें मस्जिद में कैसे आए, मस्जिद से कैसे जाएं, टॉयलेट के अंदर जाएं कैसे, टॉयलेट से कैसे आएं, खाना कैसे खाएं, किसी को सलाम कैसे करें, किसी से मुसाफा कैसे करें, किसी बीमार के पास इयादत करने जाना हो तो कैसे इयादत करना चाहिए। एवरीथिंग हैज बीन रिटन वेरी ब्यूटीफुली। जितना आप पढ़ेंगे सीखेंगे, वी विल लर्न, यू विल लर्न कॉमन सेंस। नंबर 2 ये है कि देयर आर सोशल नॉर्म्स। मस्जिद में है तो उसके नाम से लगेंगे, मेट्रो के स्टेशन में हो तो उसके नाम से लगेंगे, कॉलेज में हो तो उसके नाम से लगेंगे, लाइब्रेरी में हो तो उसके नाम से लगेंगे। नॉर्म्स हर एक जगह का लगेंगे। शादी घर में हो तो उसके नाम से लगेंगे, मैयत घर में हो तो उसके नाम से लगे। मैयत घर में कहा लगाकर नहीं हंसेंगे आप, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैयत का घर है, और यहाँ आपको संजीदगी बरकरार रखना पड़ता है। कब्रिस्तान में हो तो उसके लिए एक अलग मेथड है, कॉफी की दुकान में हो तो उसके लिए एक अलग तरीका है। हमारे भाइयों को कुछ हंसी भी आ गई, क्या भाई ऐसा ही होता है? तो मालूम होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड एटिकेट्स एंड आदाब व्हिच हैज टू बी केप्ट इन माइंड। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें कि लोगों को क्या बातें पसंद नहीं आती वो काम ना करें। जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बाथरूम ड्राई मिले, आपको कमोड ड्राई मिले। जब आप वापस निकले वहां से तो उसी कंडीशन में छोड़कर आना चाहिए। ये एम्पैथी है कि जैसे मुझे टॉयलेट पसंद है ड्राई, वैसे मुझे छोड़ कर आना चाहिए, वॉश बेसिन हो या कमोड हो या फ्लोरिंग हो। लेकिन आदमी कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करता, तो एम्पैथी नहीं होती है। और आखिर चीज ये है कि आदमी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखे और कॉमन सेंस सीखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अक्लमंदी, समझदारी और कॉमन सेंस पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।